ये कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे मैम से अपॉइंटमेंट जरूर लेना पड़ेगा। मेरा साइकियाट्री का हालत खराब होने वाला है। बिकॉज बहुत लोगों ने मुझसे ना ये कहा है, बचपन से कहा है, ये क्या मच्छी पाला है, पागल हो क्या। जो इंसानियत हम आजकल इंसानों में ढूंढते हैं वो इंसानों में नहीं जानवरों में मिलती है। They say now when God is benevolent, when he's kind to you, he sends you a pet. सो एक साइकियाट्रिस्ट को साइकोलॉजिस्ट पे इतना गुस्सा क्यों? खुन्नस क्यों है? तो क्यों गुस्सा है कि जनरली क्या होते हैं, साइकियाट्रिस्ट आर ओनली सपोज टू गिव मेडिसिन्स, दे आर नॉट सपोज टू डू काउंसलिंग। अभी काउंसलिंग, टेस्टिंग, ये सब साइकोलॉजिस्ट का काम है। लेकिन आजकल दे आर डूइंग इट, यू नो। पब्लिक को भी पता नहीं है कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है। नहीं, मोस्ट ऑफ देम हैव नो क्लू, यू नो, दैट इज द सैड पार्ट। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है। लेकिन एज अ psychiatrist is an MD. He's done his MD psychiatry. A psychologist has done her clinical psychology. It can be BSc, MSc, it can be MA, but it's a clinical psychology. So a psychologist cannot give medicines. So what happens is, first we do the testing. We are supposed to do the testing. Then we say, okay, this is wrong with the person. Then the person goes to a psychiatrist for the medication, and then he is supposed to come back to us for counseling and therapy. वो उधर नहीं होता है। सो आज ये कॉन्वर्सेशन हम शेफाली वैद्य जी से कर रहे हैं, एंड शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, नॉट अ साइकियाट्रिस्ट, नॉट अ थेरेपिस्ट। Sorry, therapist, yes. I'm a clinical psychologist and a psychotherapist. So clinical psychologist and psychotherapist. ये कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे मैम से अपॉइंटमेंट जरूर लेना पड़ेगा। मेरा साइकियाट्री का हालत खराब होने वाला है। नाउ आप लोग पूछोगे कि एक एक्वेरियम के चैनल में एक साइकोलॉजिस्ट का क्या काम? अरे साइकोलॉजिस्ट एक्वेरियम नहीं रख सकते क्या? एंड साइकोलॉजिस्ट हमें ये बता सकते हैं कि लोगों को एक्वेरियम घर में रखने से फायदा क्या है या नुकसान हो सकता है, पता नहीं हमें। ऐसे क्वेश्चंस मेरे मन में आते हैं बिकॉज बहुत लोगों ने मुझसे ना ये कहा है, बचपन से कहा है, ये क्या मच्छी पाला है, पागल हो क्या। नाउ ये आज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि पागल हूं कि नहीं हूं। साइकोलॉजिस्ट से मिलना है, कॉन्वर्सेशन है, बट अपॉइंटमेंट लेना है कि नहीं, ये आज मैं क्लियर करने वाला हूं। सो मैम शेफाली जी, आज ये कॉन्वर्सेशन हम करेंगे, विल फिगर आउट कि एक्वेरियम के मायने क्या है। एक आई वोंट से पेशेंट, एक पर्सन, ओके, एक पर्सन के जिंदगी में क्या मायने होते हैं। हाउ इज इट इंपॉर्टेंट दैट वन हैज एन एक्वेरियम और अ पेट or any such thing, you know, that can actually help his mental state. See, the human brain is very complicated. Of course. बहुत लोगों ने ट्राई किया है बट अभी तक समझ नहीं पाया कि उसके अंदर क्या होता है। सो विल इट बी सिंपल, मे बी एक नॉसिक, आई मीन नॉट सो नॉलेजेबल इन दिस, बट इफ आई से कि अंदर कुछ शॉर्ट सर्क्यूट हो गया तो तब प्रॉब्लम शुरू होता है। हाउ डज इट, व्हाट इज द सेंस इन दैट? सो अगर आपको ठीक से समझना है तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू इन अ, लाइक यू सेड, नोविस और नौसिखिए। सिंपल, यस। आप दुखी होते हो? हाँ। यस। आप वरी करते हो? हाँ। है ना? हम लोग सब दुखी भी होते हैं। ऐसा एक भी इंसान नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में जो आज तक कभी दुखी ही नहीं हुआ है। ऐसा तो हो नहीं सकता है। करेक्ट। आपने ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कभी किसी ने वरी नहीं किया है। करेक्ट, राइट? ऑल ऑफ अस वरी, ऑल ऑफ अस फील अपसेट, एंग्री, यस, ऑल ऑफ अस फील डिप्रेस्ड समटाइम्स, यस, राइट? तो ये आम इमोशंस है। इमोशंस आर नॉट बैड। जब ये इमोशंस एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर हो जाते हैं, आपको बेड से उतरने का मन ही ना करे और से 20 दिन, 21 दिन, 30 दिन आप ऐसे ही पड़े हो विदाउट टेकिंग केयर ऑफ योर हाइजीन और द थिंग्स दैट वी डू एवरी डे, दैट इज द टाइम यू हैव टू कंसिडर थेरेपी। दैट इज द टाइम यू हैव टू कंसिडर एक्सपर्ट हेल्प। सो ये हो जाता है। व्हाट हैपेंस इज, हम जो फील करते हैं वो तो इमोशंस है ना, एंड सो इमोशंस आर नॉट बैड। प्लीज अंडरस्टैंड, इमोशंस आर नेवर बैड। हम लोग सब इमोशनल बीइंग्स हैं, वी आर सोशल बीइंग्स। क्या हम किसी और ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट हो सकते हैं अगर हमारे में इमोशंस ही नहीं है? नॉट पॉसिबल, राइट?
सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दुखी होना 2-3 दिन अगर कुछ होता है तो हम सब दुखी होंगे ऑब्वियसली, लेकिन विदाउट रीजन। हाँ, सो एक क्लासिक एग्जांपल दे मैम इसमें। यस, एग्जाम्पल जैसे आई विल टेल यू, अभी आपके सपोज यू नो एग्जाम्स में मार्क्स कम आए हैं कम आए, बच्चों के, okay. ओके मार्क्स Okay. कम आए, आपको घर में किसी ने कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन आप मन से यू फीलिंग सैड। नाउ दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल। Okay. आपके एग्जाम्स होके 1 साल हो गया है एंड यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट इट एंड नॉट एबल टू डू एनीथिंग फर्दर। मतलब नया एग्जाम या नया क्लास या कुछ भी आप नया नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, आप वही स्टक हो, हाँ। देन दैट इज अ प्रॉब्लम। सो एक नॉर्मल इमोशन होना एक एक्वेरियम की तरफ, आप अभी मेरे गैलरी में बैठे हो, इतने सारे एक्वेरियम्स है, ब्यूटीफुल इट इज। आगे पीछे हम लोग एक्वेरियम सोचते हैं, बट वी ऑल्सो डू एवरीथिंग एल्स, इट्स नॉट जस्ट दिस, सो वी आर नॉर्मल। Yes, मैं बार बार absolutely. तसल्ली ले रहा हूँ कि मैं अरे, नॉर्मल हूँ कि नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप बिल्कुल नॉर्मल है। इनफैक्ट आई माई सेल्फ हैव एन एक्वेरियम, ओ वेरी यू नाइस। नो। सो क्या हो जाता है कि जैसे अभी मेरे पास भी एक्वेरियम है, तो हम लोग डे इन एंड डे आउट जब लोगों का सुनते हैं ना, वी हैव बीन ट्रेन्ड, माइंड यू, वी हैव बीन ट्रेन्ड कि हमें वो हैंडल करने को सिखाया जाता है, यू नो, कैसे हम अफेक्ट ना हो। हालांकि वी हैव टू बी वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स आवर क्लाइंट्स, वी हैव टू फील देयर पेन, देन ओनली वी कैन हेल्प देम, राइट? बट एट द सेम टाइम वी हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू गेट अफेक्टेड बाय इट एडवर्सली। तो कभी कभी क्या हो जाता है, आफ्टर अ लॉन्ग डे, इवन आई फील, यू नो, एंड आई जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ द एक्वेरियम, उनकी वो जो सेरेनिटी है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, द सेरेनिटी, द मूवमेंट ऑफ द फिशेस, इट इज सो कामिंग कि आप बस थोड़ी देर आप उसके सामने बैठो, आप उसको अब्सॉर्ब करो, इट इज अ वेरी कामिंग रिलैक्सिंग फीलिंग जो तो कहीं इसमें और इसमें नहीं आ दो सकता। पार्ट है, अब्सॉर्ब एंड ऑब्जर्व, Yes, both. दोनों Very nicely put. बेनिफिट हो जाता है। Yes, yes. सी माय पॉइंट हियर मैम इज, ऑफ कोर्स हमें पता है कि हम भी बताते हैं रेगुलरली कि यू नो एक्वेरियम्स घर में होने से छोटे स्कूल जाने बच्चों का स्कूलिंग इंप्रूव हो जाता है, उनका स्टडीज इंप्रूव हो जाता है, यू नो यंग अडल्ट्स दे कैन फोकस बेटर इन व्हाटएवर दे ट्राइंग टू डू। हाउसवाइफ्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। नाउ बिफोर दैट आई वांट टू फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन पीपल हु हैव पेट्स वर्सेस डोंट हैव पेट्स। आई मीन आप एक अंतर देख पाती हो? Yes, of course. Huge difference. Huge difference क्यों? क्योंकि आपको मालूम है पेट्स जैसे एक्वेरियम है या कोई भी पेट हो, डॉग हो सकता है, dog, कैट हो सकता है, या yes. इवन प्लांट्स हो सकते हैं। बिल्कुल, इन दिस yes. कैटेगरी दे आर नॉट पेट्स But- बट दे आल्सो गिव यू द इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी ना। A lot of energy. Like I was just telling, I sit in nature in the morning, just absorbing, you know, that positive energy. You just the greenery around you. That is so amazing, and it makes you ready for the rest of the day. True. So you get that energy from plants, animals. So you know they give us unconditional love. True. I mean, it is animals of any kind, any animal you take it, and the kind of unconditional love you get, आप उसको feed करो नहीं करो, they're going to still love you the same, you know. That is the difference when you see a person who has a pet. He is so secure, and of course aquariums में बच्चों के, now this I would like to नहीं, मैं इसमें एक क्वेश्चन, आपने बोला कि एक पर्सन हु हैज अ पेट इज मोर सिक्योर Yes. कंपेयर्ड टू अ पर्सन हु मे नॉट हैव अ Not पेट। have. दिस इज नॉट, वी आर नॉट सेइंग अ पर्सन हु डज नॉट हैव अ पेट इज नॉट सिक्योर। no Okay. compared to, He may have a different hobby. बिल्कुल, yes, Okay. yeah. But if you have a pet, you're more secure. What is the meaning of secure? Here, आप secure का meaning क्या होता है? Okay, so security means it can be any A type sense of of security, a हाँ. sense of security. जैसे आप मालूम है, आपको financial security मालूम है. When you have हाँ, enough money in the money. bank, you feel secure. It's the same when you have enough love in life. Correct. You feel secure. There's a nice feeling. Yes, you feel heard, you feel seen, you feel validated. कि मैं जैसा भी हूँ, अभी बाहर से you know आप कौन से situations face कर रहे हो, सी बाहर का वर्ल्ड आई वोंट से इज द आइडियल वर्ल्ड। हमें कभी पॉजिटिविटी मिलती है, कभी नेगेटिविटी मिलती है, कभी कोई लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं, कभी नहीं करते हैं। लेकिन वही बंदा जब घर आता है और अपने डॉग से या यू नो कैट से या कोई भी interact जानवर हो, करता है, हाँ. कोई भी जानवर हो, व्हेन ही और शी इंटरैक्ट्स एंड दे नो, अरे
forget outside world, मुझे इतना ज्यादा प्यार यहाँ मिल रहा है, मुझे किसी की जरूरत ही Correct. नहीं है. So the thing is, it's about that connection that you build with that creature. Yes. So because a lot of people, we may not see. I have a big problem. Okay, I think this is the first time I'm going to face a psychologist with my problem. Is I believe animals are more human than humans. मतलब जानवरों में इंसानों से ज्यादा इंसानियत है. एंड आई लाइक एनिमल कंपनी मोर देन ह्यूमन कंपनी. इसमें गलती है क्या? बिल्कुल नहीं. आई एम सॉरी बट इसमें बिल्कुल गलती नहीं है. इनफैक्ट यू नो व्हाट एग्जैक्टली माय पॉइंट, यू नो, कि जो इंसानियत हम आजकल इंसानों में ढूंढते हैं वो इंसानों में नहीं जानवरों में मिलती है. So because during lockdown, a lot of my, I was here in Bombay, I was alone, and a lot of my friends used to say, "अरे तू अकेला है, family सब बैंगलोर में है, तू क्या कर रहा है?" I'm like, I'm very comfortable. Because 6-7 कुत्ते थे, you know, there were all these stray dogs which we were feeding, about 6-7 cats, Okay. and you know there were so many birds. Everything was happening around you. Yes. Okay, and I would come to the gallery every day, feed the fish. वो occupied, completely mind occupied था, but so I didn't feel the need for contact. Human contact, yes. So कभी-कभी लगता है कि you know maybe we are overdoing it, but I think it's fine as long as you're happy, you're relaxed. That's what is the most important. Yeah. So when would a person you know self-implore and think कि you know मुझे एक psychologist के पास जाना ही है? When see a person, we can drag somebody to a psychologist, but खुद से अगर आता है तो then आपका भी काम आसान होता है. I'm sure as a doctor, and you can help the person better. So when in a person's life would you think कि you know एक जाना चाहिए यार, कभी ना कभी एक बार जाना चाहिए? How is that? So you know what? First of all, I would like to tell you कि ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा हो जाए तो ही जाना है. Even as psychologist, हम लोग साल में एक बार हम लोग भी जाते हैं. So it is not necessarily कि बहुत बड़ा कुछ हो जाए तो ही आपको अपॉइंटमेंट लेनी है. No need. You can just go for कि okay, I want to just get my thoughts in order. और अभी I'm facing this. Can you just help me with that? That's also fine. ऐसा नहीं है. जो एक मिसकंसेप्शन है कि एक बार गए तो अटक ही जाते हैं. फिर वो सेशंस पे, ऐसा कुछ नहीं है. आप एक सेशन 2 सेशंस के लिए भी जा सकते हो. You know? Yeah, because I think it's because of all our Hindi movies वो पागल खाना दिखाते हैं and वो बाल कुजा रहे हैं, you know, all of that. It is so not true. It is So you think कि हाँ, जब तक वो सब ना करे तब तक आप डॉक्टर के पास ना जाए. So anybody can visit the doctor, even if it is just a mental turmoil. You know, कुछ तो सोच रहे हैं, financial issues है, you want to discuss it with someone. Okay? Yeah. So basically समझो एक दिन मेरे कुछ बिजनेस में या किसी चीज में कुछ इश्यूज है, and I just want to discuss it with you. या okay, प्यार मोहब्बत में आजकल बहुत वो देवदास बनते हैं लोग, तो I can come and discuss it with you. बिल्कुल. So that is what a psychologist would help you with. Another thing I want to tell you is everything is confidential. You know, एक चीज जो आपके और आपके साइकोलॉजिस्ट के बीच में है, उसमें से एक चीज भी बाहर नहीं जाती है. These are our ethics and this is a non-disclosure. We have to, you know, that is how it goes. Everything is confidential. मैम मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है. आप शेफाली वैद्य साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट निकाल के सीक्रेट कीपर लगाओ, ज्यादा बिजनेस होगा. I agree. क्योंकि लोग इसीलिए डरते हैं कि हम आपको बताएंगे और आप कहीं गलती से कहीं बता दो तो वो तो सवाल ही नहीं है. एक तो हम किसी को बताएंगे नहीं, कोई भी साइकोलॉजिस्ट होने दो, not just me, anyone. And we are non-judgmental. प्लस हम लोग को इतना एक्सपीरियंस है इतने सालों का कि हम सब सुन चुके होते हैं. तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे अब मैं ये इनको कैसे बताऊं, मैं बोलूं कि नहीं. वो जज करेंगे मुझे. Non-judgmental, totally. So that's how it works. Yeah. मैम ऐसा कोई केस आपके पास जो आया है एंड एक पेट के वजह से वो ठीक हुए हो? एक एग्जांपल, I mean of course no names and nothing because it's confidential, but you can always tell us what happened and why. Yes. You know? So there was this child, typical teenager, you know, who was having a lot of anger issues. अभी teenage में हम सब, we have all gone through it, you know. लेकिन आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा एक डिग्री थोड़ा ज्यादा हो रहा है वो एंगर भी. तोड़फोड़, मोबाइल तोड़ना, टीवी तोड़ना, रिमोट फेंकना, ये आजकल कुछ ज्यादा हो रहा है. नाउ इट वाज सजेस्टेड, ऑफ कोर्स, अगेन सॉरी मैम, क्यों हो रहा है? ओके, यहाँ आई वुड लाइक टू से कि बहुत सारा एक्सपोजर जो है जो नहीं मिलना चाहिए, ओवर टीवी, ये सब, ये मोबाइल, एआई,
बहुत ज्यादा हो रहा है. पूजा बहुत मोबाइल पे ज्यादा. कम रहना. Okay, I'm sorry. Yes. So what happened was in this case, what after first it was ascertained कि क्या है उसका क्या problem है, like parents से जम नहीं रहा है, everything was a chaos in the house. तोड़ा तोड़ी तो इतना हो गया था कि पूछो मत, Then उसको counseling करके उसका पूछ के because these are very intense interviews basically जो हम लोग employ करते हैं. They probably don't want to discuss it with you. Probably. But still we have our ways, we make them so then it was ki okay, let's get a dog. And you won't believe आज अभी 2 साल हो गए हैं since they have the pet, and the change in this child is tremendous. Touch wood. Very happy. By the way, it was immediate. That change was immediate. After it, of course, the puppy, the dog came in the form of a puppy. So caring for the child, for the pup, and feeding the pup, taking it for walks, and everything was so like that nurturing instinct in the child was kind of so that whole child's energy was channelized towards the puppy. That's what you're trying to say. Yes. So that negative energy जाके positive हो गया. बिल्कुल. Oh, that is fantastic. सर एक और बात, हमने किसी को एक्वेरियम भी रखने को बोला था, and वो भी like that is also very it was a child, it was आजकल जैसे बोलते हैं कि टीनेज थोड़ा जल्दी आ जाता है, so around 10 years old. Correct. वो जल्दी maturity आ जाता है. तो वो symptoms भी वैसे ही दिखाने लगते हैं. Correct. So then so the parents were working parents, so they didn't have the time for a dog or something, तो एक्वेरियम रखने को बोला. Now what happened was this child जो अपना जूता तक ऐसे उड़ा के छोड़ता था, he would not even pick up his own shoe, after coming back, बैग इधर छोड़ दिया, ये उधर छोड़ दिया. उसको बड़े इससे ना to care for the fishes in the aquarium. Now you can imagine it's everything is in this place, so everything went so smoothly. The child developed those feelings, so he became more organized because he knew कि एक टाइम पे उनको किस टाइम पे खाना देना है. The parents would छुट्टी के दिन fish tank cleaning के लिए उसका help लेते थे. So all that made such a huge impact on the child कि उसका जो behavior था, so before it became a problem, it was sorted. This is so true, ma'am. And आप एक बच्चे का बता रहे हो, मेरा लाइफ में ये एक्चुअली हुआ है. Okay, I won't say I've had a bad childhood. Okay, I'm a very lucky person. Okay, because some amazing things have happened to me in my life. But yes, childhood में losing a parent and these kind of things kind of affect you. Of course. And we were in a joint family, and I always thought people don't understand me. Yes. Okay, I was not a different child. I was smarter than them. I'm sorry, that was a very egoistic comment, but it's okay. I was smarter than them because at the age of 12, I was advising my uncle and grandfather that the mistakes they were doing in the business, and they realized it 3-4 years later. Okay, maybe I understood it better, and because when I spoke to them, and they would just brush me off saying, "Hey, tu chup. तू तेरे को क्या पता है?" I think that I would go and talk to my dog. Okay. Oh, wow. A lot of people think, I mean, यही पागलपन का सब pointers होंगे, but probably because she would always listen. Yes. Because I needed somebody to talk to. And I got my solution also. Not that she turned around and said, "Hey, Mayur, ऐसा कर." ऐसा नहीं है. But because she was listening, वो solution मन में आ जाता है. Yes, वो हमारा काम कर रही थी. Exactly, And मुझे aquarium के साथ भी ये होता है. I mean, I don't say this, but the truth of the fact is, the aquarium talks to me. Again, it's not literally talk नहीं होता है. It's in your mind, but there is a connection. There is a strong bond, right? See, we always say that school children, when they have an aquarium, they study better. Okay, because the sciences are there. Teenagers का आपने बताया. What about housewives and senior citizens? Yes. Even children में मैं एक और बात Please, बताऊँ ma'am. कि पूरा Please. इकोसिस्टम ही इधर है. तो वो लोग सब इधर से ही पूरा सब कुछ सीख सकते हैं. How the fishes and the plants True, grow, chemistry, everything, botany, yes. zoology, physics, electrical, electronics, plumbing, carpentry. That's why it's, lot of people ask me, आपको carpentry आता है? I'm like, हाँ, aquarium का stand बनाना पड़ता है. True. So everything is connected to the aquarium. बिल्कुल. So now coming back to your question, कि housewives के लिए how it is useful, housewives या adults and Yes, even senior citizens के लिए. True. So see, because sorry ma'am, very Yeah. sorry. I believe that housewives are under a lot of pressure. Though it seems we say housewives in a very literal term,
But I think that they have the most pressure job, even Yes. more pressure than a corporate office को जो I बंदा agree, जाता है, totally I you know, agree, yes. बिकॉज वो सुबह सबको उठा के उनका नाश्ता तैयार करके उनका कपड़े वपड़े दे के उनको ऑफिस भेज के देन घर का सब कुछ देख के देन अगले दिन शाम का प्लान करके अगले दिन का प्लान करके शी इज ऑल्सो मैनेजिंग द फाइनेंसेस Yes. सो शी इज लाइक एवरीथिंग यू नो सीओ सीईओ सीएफओ बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल, yes. मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब Oh, most stressful. I would say it's the most difficult job. difficult also. I mean, You know? I won't even go close to that. No, because it's not just that. Even you know, आजकल बोलते हैं अरे उसमें क्या है? Servants नहीं, है नहीं, आपके नहीं, पास. नहीं. Hello, to get work done from there. That also is a very difficult It's job. not easy, Yeah. you know, and that only a housewife can understand. It is not easy. So yes, she goes through. And a also, lot of if pressure. the help does not come, you have to do it. Totally. हाँ. Totally. So again, ma'am. प्लस व्हाट हैपेंस इज अभी बाहर का भी अभी तो कैसे पहले जमाने जैसा नहीं है कि हाँ आप घर संभालो आपका काम हो गया आपको बाहर का भी काम करना पड़ता है यू नो बैंकिंग वर्क नाउअडेज इज डन बाय द हाउसवाइफ Yeah, ओनली they only manage everything. बच्चों का स्कूल जाना है मीटिंग पीटीए है ये है वो है यू नो जनरली it's the mother it's the housewife who goes so it is not just one thing that she is looking she has to be multidimensional there are so many other things that she has to look into so at the end of the day it is a very tiring maybe a very satisfying job but a very very tiring Yeah, but see, there are career women who do part-time jobs plus Yes. घर का काम. And see, मेरे को हमेशा ये लगता है मैम. My mother, she used to ride horses, tennis खेलते थे, and this is I'm talking in the 70s. I was born in the 70s, so maybe 60s, and that's when they learned in those days. So our घर, they were very forward in that sense. But she also had some dreams and ambition and thing, but then they come to किसी से शादी करते हैं वहां पे आते हैं बच्चे बच्चे पैदा करते हैं वो ड्रीम और उसका वो सब गायब ही हो जाता है then they start seeing that in us कि बच्चे वो ड्रीम फुलफिल करेंगे ये see what level of stress that create and how would something like an aquarium or something do good for them. So that is a very good question because what happens is this generally gets ignored. You know, it's just taken for granted that yeah, she has come, Correct. she has to do it. Correct. You know, even from the girl's family also, this is just taken कि हाँ उसको तो It's करना ही है. expected. It's expected. But the pressure, see, even getting used to, or rather the acclimatization, as we say, कि the transition from this house to that house it is difficult but then it is expected so there again the aquarium helps because what happens is the stress is there you can't but the serenity the calmness the anxiety lowering properties that even caring for the fish or just looking at it I would say you won't believe every fish if you actually observe because I have done that so I'm telling you every fish has a different personality Yes, true. I have seen that like one of the same species also one of them will be like aggressive very true, very dominant. Yeah and the other one would maybe just follow or something like that so when you observe you come to know so many So the things. dominant one is the wife, ma'am. Good one. Actually, in fish keeping, it's the other way around. It's usually a dominant male. is it? So like in dogs, like in wolves, like in the hierarchy. That's generally what it is. But always dominant one are the women. So here I would like to, Yes, I'd just like to give an example. So we had two dogs and one cat. Okay. Now my elder dog was a male dog, male child, and the cat was a female. No, the other one was also a female. Okay, the dog. So this dog, elder one, and the cat had grown up together. So they were quite fond of each other. So वो होता है. he would sit with her and all that. Now this one, she came much later. Okay, she was like literally ऐसे कि proprietal right है उस पे. तो once we had this dog bed, तो दोनों बैठे थे. The dog and the cat were sitting in it. This girl came from somewhere and उसका collar खींच के उसने उसमें से निकाला कि how dare you sit near the cat. She made him get up from there. I have a video also I think somewhere where she made him get up from there कि you are mine. You cannot sit with this cat, हालांकि the cat was the oldest, मतलब वो तो हमारे घर I में think कितने मुझे सालों लगता है से आपने ये कहानी ना एकता कपूर से शेयर किया होगा. क्यों किसने कोई तो सीरियल में है मैम सेम. वो सास बहू ननद वाली स्टोरी. बट ये तो मतलब इनमें पता है so इनमें भी वो जेलसी काफी होती है but it is endearing it is so sweet to watch. That's true.
that's true. So because ये sorry, नहीं तो उसी में अपना स्ट्रेस पूरा निकल जाता है. हाँ, दे फॉरएवर कुछ ना कुछ हो रहा होता है which is like so endearing या you know so funny कि आप anxious रह ही नहीं see, because सकते this हो. is amazing, ma'am, because you know, I have seen this. You come back, you're stressed and something, and the dog just comes next to you, cuddles, yes. and आप सो भी जाते हो, उसके ऊपर हाथ रख के या पैर रख के सो जाते हो, and suddenly your system is calm. Revitalized या पूरा. वो ऐसा calming. क्या है जो, I mean, वो तो I think ऊपर वाले की दुआ है. Absolutely. It's beyond psychology and everything. Yeah. They say now when God is benevolent, when He's kind to you, He sends you a pet. Pet. So God is kind to you. Get an aquarium. Oh yes. I mean, just look at. I can point to this. Yes. I mean, literally look at this. The serenity. The fish is going from one side to the other, and the waves, the bubbles. You know, whatever. Just look at it. You look at it for 10 minutes a day, and all your stress, the troubles. See, troubles and all. Who doesn't have? Everybody has, right? Is there any one person जो बोलेगा मेरे को तो कोई तकलीफ ही नहीं है बाबा? ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है, right? True. लेकिन आप देखो आपके ब्रेन वेव्स भी वैसे ही काम होते जाते हैं. मेरे पास दो क्वेश्चन है. पहला तो ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस कनेक्टिंग टू यू नो पीपल विद Alzheimer's, people with these kind of diseases, and you know, doctors suggesting having an aquarium, watching an aquarium. Yes. Does it really help? Oh, it helps a lot. It helps. I haven't. उनका मेमोरी बढ़ने लगता है. Yes, so I'll tell you how. Now, Alzheimer's में what happens is there's a lot of confusion also. You know, so the person is forever stressed. जो मतलब they're kind of elderly, तो वो stressed होते हैं. They are not unable to do certain things. तो अगर मतलब kind of have allergies also at that time, तो वो काफी सारे pets भी नहीं tolerate कर पाते हैं. This is the safest bet. And जैसे मैंने बोला कि वो they are stressed because they can't remember, लेकिन you know they're confused most of the time. तो again this is a very calming effect on them. Alzheimer's, elderly, especially elderly people who are going through Alzheimer's, dementia, उनके लिए तो ये बहुत वो बहुत कुछ भूल जाएंगे लेकिन ये नहीं भूलेंगे. Correct. Because I see a lot of physically handicapped children, autistic children, you know, mentally slow children. Yeah. You know, retarded is a bad word, but generally these challenged children, adults, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. बहुत ज्यादा सर. मतलब इतना कि हम तो especially autistic children, क्या हो जाता है, autistic children do not they cannot connect to other human beings. Correct. But they connect very well to an aquarium. और पेट्स को थोड़ा टाइम उनको लगता है, बट दे कनेक्ट. लेकिन एक्वेरियम को बड़े फटाक से. Because I think humans में क्या होता है ना मैम, humans are generally judgmental and mentally उनको लगता है कि ये बच्चा ऐसा करना चाहिए, बट बच्चे का अलग ही टेम्परामेंट है. Animals are not like that. आप जैसा बिहेव करोगे वो आपके साथ घुल मिल जाते हैं. वो खेलना है खेलते हैं, सोना है सो जाते हैं. So I guess that's the whole the thing with. You must have seen so many pictures where or you must have experienced it also कि आप बता रहे हो कुछ, you know, to your dog or your cat or something, not cats but generally dogs. So when you're telling something, the way they're listening to you, the way they're looking at you, जैसे सब समझ रहे हैं. आप भी जानते हो कि पता नहीं कितना समझ रहे कितना नहीं, but you know even that is so. So dog is like having a best friend, cat is like having a wife. Best friend listens to you and does not. Oh my God. I'm really sorry. All the women here are going to beat me first, starting with Shefali ji. See, but I mean, jokes Yes. have to be there. They're fun. True. Yes. Aquarium एक तरफ. See, generally there is this fear of generally going to a doctor, and people have this कि you know लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे. तो ऐसे सिचुएशन में how does one handle it and get help? So ये जो स्टिग्मा है ये काफी सालों से, मतलब I would say बहुत सालों से, जैसे मैंने मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट किया 30 years ago. Okay? No, you just look 28, ma'am. Thank you so much. अरे But क्या बोलता है public? Yes. Thank you so much. But so 30 years ago ऐसे होता था कि अगर मतलब पहले तो वो आते नहीं थे, अगर मुझे डॉक्टर्स के पास जाके उनको समझाना पड़ा कि मैं क्या करती हूँ, even they were not aware. Suppose अगर by chance मुझे रास्ते पे कोई दिख गया या उनको मैं दिख गई, they would change the रास्ता, you know. वो actually road cross करते थे. Yes, they would cross the road
एंड शुरू में ये बहुत दुख मतलब इट यूज टू हर्ट, देन लेटर ऑन ऑफ कोर्स वी अंडरस्टूड. पार्टी में अगर कोई गलती से दिख गया एंड दे उनके चेहरे के पूरी हवा ही उड़ जाती थी, बिकॉज दे वर लाइक ओ माय गॉड. अब क्या पूछेगी ना. हाँ, अगर उसने सो वी लर्न नाउ. ऑफ कोर्स नाउ बहुत अलग बात है. अभी तो आप यकीन नहीं करोगे, टीनेजर्स या कहीं भी जाओ, वेरी प्राउडली दे से ओ माय थेरेपिस्ट. See, that is also because of, I think we should credit it to people like Deepika Padukone. Yes, and, you know, they're amazing. I mean, she's a great actress. I'm sure she's a great human being. But I think I kind of most thing I appreciate about her is the fact that she could openly come out True. and talk about her problem. Because see, हम लोग casually बोलते हैं क्या problem, अरे नहीं यार थोड़ा depressed हूँ. But you don't realize कि वो actually depression is not just something that you take lightly. It's something so much more. Very true. Okay. Yeah. And it's only when you experience. And I remember वो time में when she came out, you know, Deepika ji came out and spoke about it. There were a lot of people who were talking कि अरे क्या बकवास है, ये क्या है, वो क्या है. They were talking ill of her. See, that is where the issue starts, na? Because see, if someone like Deepika Padukone, okay, she had the guts to come out and explain. Okay, that's great. But she also got trolled for it. Okay, imagine a normal person, उसका क्या हालत होता होगा. बिल्कुल बिल्कुल. ये है, ये प्रॉब्लम है. एंड वी आर ट्राइंग, ऑल ऑफ अस इन फैक्ट फ्रॉम द मेंटल हेल्थ फील्ड, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि ये जो स्टिग्मा है ये निकल जाए. एंड ये थोड़ा सा एग्जैसरबेट हुआ है मूवीज एंड उसमें से थोड़ा ज्यादा थोड़ा सा बदनाम हो गया है. बट आई थिंक वी कैन यूज मूवीज एंड दैट. No, today even in movies they're talking about going for therapy. Yes. And they're talking the right things. Nowadays they're doing that. That's a good thing. Very No, good. that's a very endearing thing. It's nice to see because I mean I don't think there is an issue with that. You know. So a parent told me कि आप इसको ना mental health मत बोलो, आप कुछ और नाम दो. I said क्यों? In fact, and I'm just voicing what most of my seniors in the mental health field also feel. They also feel कि why should we change that? What for? It is something to do with your mind. When it is something to do with your mind, it is mental, right? So it is your mental capabilities which are. मैम इसलिए मैंने बोला कि आप सीक्रेट कीपर रखो. see, I think the problem is क्या है? We've used these words very easily. अरे वो mental है यार. So the meaning of it is very wrong, used wrong. मजाक हो जाता है. So when you say mental health, then वो straight away पागलपन. Because people fail to understand कि I'm sure पागलपन का भी 1 to 100 1000 चीज होंगे. Of course, पागलपन ये बहुत एक लूज टर्म है, वेरी लूज टर्म. ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ही मतलब मैड ऐसा कुछ नहीं होता है. इट इज जस्ट द डिग्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर. जैसे आपकी बीमारी के भी डिग्रीज होते हैं, वैसे ही आपके मेंटल स्टेट के कुछ डिग्रीज होते हैं, या मेंटल डिसऑर्डर के कुछ डिग्रीज होते हैं. आज कम बुखार है, कल ज्यादा बुखार है. 104 हो गया तो डेंजरस बुखार है. 100 हो गया, 101 हो गया तो नॉर्मल बुखार है. बिल्कुल बिल्कुल. So वो भी ऐसे ही है. Yes, it is just like that. जब हम नॉर्मलाइज करने लगेंगे, जब हम मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने लगेंगे और नॉर्मलाइज करने लगेंगे, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड विल डिसअपियर. आई एम श्योर मैम, बिकॉज सी आई मीन everybody needs, see, I'll give you another example, ma'am, correct me if I'm wrong. See, a lot of people ask me ki how is it that you're always happy? You do everything, you're constantly at work, you're constantly busy, you're focused. ये सब मुझसे पूछा जाता है. And I always tell them it's because of the friends that I have. Oh yeah. बचपन से हम लोग we went into a boarding school and it's the same friends that have continued. People have joined, but it's the same group of friends. And हम लोग आदत आज भी है. If I'm not in Bangalore, and most of them are in Bangalore, but we call and मेरे को कुछ मन में कुछ हो रहा है, I talk to them. And दोस्तों में कैसा है, कुछ उल्टा जवाब ही आएगा. Yes. Okay, दोस्ती है, you can say what you want, but also कभी-कभी उसमें एक brilliant solution निकलता है. And you start feeling कि भाई अरे इतना भी complicated नहीं है जितना हम सोच रहे हैं. So I think my biggest, how do you say, my strength, yeah, is the fact that I have somebody I can talk to. Today's generation, where are the friends? वो मोबाइल फोन,
So they don't have that connection. वो अड्डे पे या नाके पे जाओ, बैठो, गपशप करो, चाय पियो, कुछ भी बात करो. So, loneliness has become a pandemic today. 100%. It's as good as a pandemic. I was reading somewhere that today the biggest pandemic is loneliness. It's loneliness, yes. And kids are facing it. Kids are facing it. 18-year-olds, 19-year-olds, or even younger. They come and it is very sad when they tell me that I have no one to talk to. Even though it is our profession, but it feels कि okay, तो अभी वो सिर्फ बात करने के लिए भी कभी-कभी आते हैं, that, which is sad, isn't it? Yeah, but आजकल I was reading somewhere कि जापान में you can pay money and talk to somebody, call them to a cafe as a friend. Yes, yes. अब पैसे देने की नौबत आ रही है यार. बिल्कुल. And it is sad. Trust me, I mean, हम लोग भी इस प्रोफेशन में है, ये हमारा प्रोफेशन है, but जब ऐसा कुछ होता है ना, तो दुख होता है, बहुत दुख होता है. How does one get out of it? One thing is, of course, connection. जो people have lost the art of connection. People that have lost the art of communication. Communicating, डरते हैं. Yes, yes. I think I won't say हमारा generation because हम तो अभी भी young है. Yes, of course. So, but we can talk to anybody. मैं ऑटो ड्राइवर से बात शुरू कर लेता हूँ, किसी से भी बात कर लेता हूँ. I have no problem. But today's they think it's not scary to talk to people, right? You just talk. You just talk, which comes very naturally to us. Exactly. उनको effort लेना पड़ता है. They can't do it naturally. जैसे अगर बाहर कोई है तो हाँ हेलो हाय करके हम लोग तो बात शुरू कर देंगे, लेकिन उनको ऐसा नहीं होता है. They just don't. They're tongue tied. They don't know. They have lost क्या the बोलना art है, of क्या small talk. पूछना है. Small talk का तो मतलब it's an art, Yes. वो तो it is lost. It is lost. उनको सिखाना पड़ता है. The art of communication. आप ही देख लो, आसपास ही देख लो, ये क्लासेस क्यों इतने फुल जा रहे हैं art of communication के. Communication आजकल सिखाना पड़ रहा है because parents are busy. Nobody has time for the children. No, and see, nuclear families, that's another thing, Nuclear because families, joint I agree. families में क्या होता था? I mean, I don't think my parents ever knew where I was. सुबह उठाओ, नाश्ता खिलाओ, भगा दो बाहर. बिल्कुल, yes. You are in the house only if you're sick. Exactly. Yeah. Nowadays, if you're not in the house, then you can't go out of the house. It's very crazy. I would like to tell about one particular case here, because here what is happening is even parents sometimes, even though they are our generation parents, but because of this fear of the outside world, they're keeping the daughters or the so cooped up कि वो बोलते हैं हाँ मोबाइल देख लो, घर में क्या नहीं है, आप घर में ही रहो. But they don't understand. They are actually making the child handicapped because he or she will not be able to face the outside world when required. See, ऐसा एक situation था मैम. I was generally telling somebody कि your child can use. I thought that the child had ADHD because of the lack of attention, and I said you should get an aquarium. नहीं हम actually somebody else told us, so we have an aquarium in the phone. Oh, God. He's feeding the fish in the phone. And I said, what? Come to my office one day. A request hai, humor me. Then they came there, here, the child sat in front of the aquarium and he wouldn't leave. Right. Okay, and then they realized, oh ये phone और इसमें क्या अंतर है? अंतर है, बिल्कुल बिल्कुल. I mean, real life is just amazing. The colors and all, you cannot get them. Correct. I have a very close friend, actually client, now friend. उनके घर में they finally decided a few years ago, okay, before lockdown this is, okay, because they had 2 teenage kids and both of them were working, and they would not even come and sit and have dinner together. And even if they come onto the table, they're busy. So he threw out the TV, put it into another room. He said no phones, and they have a beautiful big aquarium, dining hall, sitting room, aquarium. So dining hall खत्म करते हैं खाना वाना, then they go sit in the sitting room and aquarium है and they're talking. So that aquarium starts their conversation. Yes, it becomes a focus of conversation. Yes. So it's true. And so आज you've come here now. I should be honest. This is your first visit to my gallery. True. आपका क्या feeling है? Oh my God, मेरे को तो आते ही I was mesmerized because there are all kinds of aquariums, all sizes, and the colors of the plants and the flowers. That's a flower, right? Yeah, that's It's beautiful. bromeliad, yes. Yeah, I mean everything is so beautiful. So like when we came, it was pretty hot outside, and Yes. we came by road and it was like dark. But the moment we entered, it was as though we are in a different universe.
You know, it was so beautiful. Everything, whatever it is, whether the plants, and there are so many unique things that you have. So the fishes also, and the what you have over here, the terrariums. Yeah. There's so many unique things, and they're so beautiful that it just transports. Like जो भी थकान थी, जो भी बाहर का travel का थकान, it just vanished. I'm so glad, man. It is beautiful. I'm so glad. So, शेफाली मैम, अगर आप एक जनरल एडवाइस देना चाहो to people in general, say parents for their children or young teenagers or working professionals, क्या एडवाइस दोगे आप? So, first of all, let me start with parents, because they are the ones who, you know, right from childhood to say teenagers, they are the Ones who are nurturing the gatekeepers of the child. So, I would like to say, please become a role model. If you want the child not to use the mobile, आप भी उसके सामने मत यूज करना. You know, हम लोग बोलते हैं, especially fathers, अरे काम का है, अरे रुक सकता है यार, काम थोड़ी देर. Correct. कोई किधर भागा नहीं जा रहा. कोई नहीं भागा जा रहा. When you're with the child, be with the child. जहाँ आजकल ऐसा हो गया है कि लाइक यू राइटिंग से न्यूक्लियर फैमिली, तो हर कोई अपने अपने रूम में है, अपना अपना कुछ कर रहे हैं. मेक श्योर देयर इज फैमिली टाइम. व्हेन यू ऑल आर, आई अंडरस्टैंड पेरेंट्स हैव टू वर्क, ओके, आई वोंट से मदर हैज टू स्टॉप वर्किंग एंड स्टे इन द हाउस. दैट इज नॉट प्रैक्टिकल. दैट्स नॉट प्रैक्टिकल. ऑलराइट, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल. बट व्हाट यू कैन डू इज, तीनों मिलके आप बैठे हो, आप बात कर रहे हो, कम्युनिकेट करो. एंड कम्युनिकेट करना मींस क्या? नॉट पढ़ाई कितना हुआ आज क्या किया, बिल्कुल नहीं पूछना. स्मॉल टॉक जो आप बोल रहे थे, स्मॉल टॉक, कुछ भी बात करो. हाँ, कुछ भी. आज स्कूल से आते समय कुछ इंटरेस्टिंग देखा क्या? You start, you know, as something interesting happened with this person, that person. Yeah, I saw something interesting while coming here. You know, तो आप ऐसा, you start the ball rolling. But conversation. Try not to give too much advice. क्योंकि वो nagging हो जाता है. Please listen. Listen to your child. Whether it is verbal, it is body language, non-verbal, whatever it is, be attuned. हाँ, ये भी नहीं कि बहुत, अरे क्या हुआ, मेरे को बता क्या हुआ, आज क्यों शांत है. No, give him space. अच्छा, बोले तो तकलीफ, शांत तो तकलीफ, वैसा नहीं होना. Exactly, वैसा नहीं होना चाहिए. Teenagers understand that they, you know, like see, this is about I want to children. add one point, ma'am. I keep saying I'm a very, very lucky person. Okay, see, my mom started off something when I was very young, and she would tell me कि, I mean, of course, she was very strict. Okay, but she would tell me कि हर रोज आपको कुछ नया कुछ सीख के मेरे को आके बताना पड़ेगा. Okay. So I used to come back from school. I think this was about 2:30, 3:30. I used to come, and you're always hungry. The food will be there, everything will be there, and she will say, "Acha, so what did you learn new today?" Okay. Yeah. Okay. Now the strictness was, you tell me and then start eating. Start eating. Yes. So आज भी इतने साल बाद एक, अगर मैं शाम को घर लौटूं and I think कि आज मैंने कुछ नहीं सीखा, वो अंदर ही अंदर it's an uncomfortableness. You know, so you try to learn something. So आज चलो इंटरनेट वगैरह है, you pick up something. But those days it was not like that. You know, sorry, you were saying. You become more alert. You know. Yes. You became more alert कि हाँ, you know, you become more focused. And अच्छा, ये भी क्योंकि many times we just go through not even realizing कि, you know, not taking in the sights and the sounds. But in this what happened was you became more alert कि हाँ, ये मैंने कुछ नया देखा. Because मम्मी को जाके बताना है ना. Yes. Very good. That's amazing. Yeah, I mean, see, that's what I'm saying. वो generation did thought differently. Yeah. You know, they thought, and I don't think my dad or mom has ever advised me कि ये करो कि वो करो. You know, कौन अपने बेटे को बोलेगा कि aquarium बनाओ? Yeah, right. Okay, they would not. That's not a career choice. Yes. Chalo, that's always lucky, because I think parents want to mold their children in a certain way, which is an issue. They also want to make them better than themselves, another issue. Let them be. Let them be. Let them follow what their heart desires. Trust me, they know. They are more aware of what is going on around them, because we have you know, crossed a particular generation. Now it's their time. Let them be. हाँ, अभी तक आपको उनको से teenagers और in their 20s जो भी सिखाना था, जो भी बताना था, वो हो चुका है. अभी आप जो बताओगे वो बस nagging ही रहेगा. Because trust me, in today's world, they are more aware of उनके जैसे professions है, क्या नए नए चीजें आ रही हैं. They are more aware, you know, तो उनको सुनना. How important is it for a parent to inculcate a hobby or pet keeping in a child? Extremely. And again, this can be done only through modeling. By modeling, I mean कि if the parent is kind towards animals, the parent is, you know, taking care of so when the child sees that, वो automatically आ ही जाता है, you know. One but it should be encouraged. पूजा, modeling मतलब ramp walk नहीं बेटा. Okay? Modeling मतलब you एक रूपांतर. Yes. Right. I keep pulling her leg. I know.
and she takes it so well. So that is very very important, you know, like they should inculcate, because generally कैसे होता है, if in a couple also one is very fond and one is not at all fond, तो वहां पर थोड़ा इशू आ जाता है. बट ये देखा गया है कि जो not very fond होता है, once the pet comes, वही सबसे ज्यादा attach हो जाता है. Oh, I've seen this You know, happening. this I've seen this happening. so many Yeah, yeah. times. It is, My chachi, she used to be scared as of hell with dogs. नहीं मयूर दूर रखो. Finally she got a dog at home. वो दोनों बाजू में बाजू बैठे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ साथ में ही होता है. yes, that is the beauty, you know, that is the magic, I would say. They are magical beings, you know, sent to us, so we should cherish them. So having a hobby is, see, on a 1 to 10 scale for any child, whether teenager, young adult, you know, even a professional or even an adult, retired person. बिल्कुल. On a 1 to 10 scale, having a hobby is, what would you rate it? 1 being the least and 10 being the most. 12. Oh hell. I would say 12. Sorry, You have number to खत्म हो गए have- मेरे. Say why? Because see, when you are a senior citizen, there are very few things that you have retired. Your kids You have had a grown up. discipline, एक Yeah. routine था, अभी वो खत्म हो अभी गया. वो खत्म हो गया है. Aquarium, gardening, dogs और जो भी है anything, pets, anything. that is the best way to spend your life, because you are getting to care for, you're getting to nurture, you're getting to look after the fishes, you know, they're dependent on you. See, problem कब start हो जाता है? When these senior citizens start feeling useless. After retirement, this is what generally, you know, creeps in. So we get a lot of geriatric population also, जहाँ they are feeling very, you know, lost, because अब कुछ है ही नहीं करने को, nobody is dependent on them. So when you gift them or when you ask them to look after an aquarium, for example, you know, feeding them, looking after it, keeping it एक sense clean. of direction या एक focus, Yes, एक आ जाता काम मिल जाता है उनको करने के बिल्कुल लिए. बिल्कुल. And something which is so beautiful. I mean, who would like to, you know? मैम, आज के इस सोशल मीडिया के जमाने में, ओके, पीपल लाइक टू पुट पोस्ट, यू नो, आई डोंट नो, आप भी डालते होंगे, मैं भी कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ, सब लोग डालते हैं अपने अपने हिसाब से. एंड देयर इज दिस वांट टू बी लाइक्ड, ओके, लाइक्स ज्यादा आना चाहिए, फॉलोअर्स आना चाहिए, सब्सक्राइबर आना चाहिए. बट देयर इज एन इनेट फियर. मुझे क्या, मैं क्या ऑब्जर्व किया है मैंने, मुझसे मेरे साथ भी होता है कि जैसे आज आपका और मेरा वीडियो है, कभी ना कभी वो आएगा और बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, उनमें 100 के ऊपर अच्छे कमेंट्स आएंगे, 1-2 बुरे कमेंट्स आएंगे. वो सिर्फ बुरे कमेंट में मेरा फोकस ज्यादा क्यों जाता है वर्सेस ऑल दी अच्छे कमेंट्स. राइट. आपके कितने दांत हैं? 32. उसमें से एक में पेन है, आपका ध्यान कहाँ जाएगा? पेन पे ध्यान जाएगा. राइट. इट्स लाइक दैट ओनली. अच्छा. लेकिन हमें उस पेन पे ध्यान नहीं देके या वो 2 कमेंट्स पे ध्यान नहीं देके हमें अपना फोकस चेंज करना है. राइट. इट इज ऑलवेज लाइक दैट. अगर जैसे आपने बोला सब अच्छा है लेकिन वो नेगेटिव कमेंट है, उस पे ही पूरा ध्यान जाता है, तो ये कॉन्शियसली करना पड़ेगा, ये अपने आप. इसमें 2 पार्ट है मैम. इनिशियली मुझे बहुत तकलीफ होता था, बट देन आई रियलाइज्ड, यू नो, आई एम वेस्टिंग माय एनर्जी ऑन द नेगेटिव एंड इट्स हर्टिंग मी. Absolutely. So you stop. Yes, You know, you got so to. मैं यूजुअली क्या करता हूँ, कोई नेगेटिव कमेंट आता है, ये वीडियो बकवास था, आई विल रिप्लाई 100% करेक्ट, थैंक यू वेरी मच. कि Yes. अब क्या बोल सकते हो तुम, Exactly, बोल लो. Exactly. They You know? can't. They can't do Yeah, anything. they can't. So आपने मैं कुछ भी वो, बंद कर दिया. हाँ, मैं वो घुमा देता हूँ. See, but the other point is, what is that urge to make a negative comment? हाँ, See, yeah. बचपन से we are always taught कि अच्छा बोलो, you know, हमारे रिलीजन में है, वो मराठी में क्या होता है, पूजा, गोड़ गोड़ बोल, क्या था वो? तिल गुड़ गया गुड़. हाँ, तिल गुड़ गया, गोड़ गोड़ बोल. हाँ. बोला. So these things are, it's in our culture. Yet why is it that people are so judgmental, and why is it that they have to comment rudely on somebody? वो क्या है उनके अंदर, उनके दिमाग में क्या साइकोलॉजी चल रहा है? Yes, so ये ऐसा और है. शायद वो सब साइकेट्रिस्ट है. नहीं, यहाँ क्या हो रहा है आप समझने की कोशिश कीजिए. वो आपके सामने नहीं है. वो यू नो, एक होता है ना ऐसा टपली मार के कोई चला जाता है. हाँ. इट्स लाइक दैट ना. आप सोचो लाइक अ प्रैंकस्टर. लाइक अ प्रैंकस्टर. एक गाड़ी में आप जब जा रहे होते हैं, ड्राइविंग में हम लोग मैक्सिमम गालियां देते हैं. करेक्ट. लेकिन हमारे आजकल कांच बंद होते हैं. हाँ. मैक्सिमम जितना भी बोलना है हम बोलते वो हैं. हम इधर ही बोल रहे हैं. हाँ, नोइंग कि सामने वाला कुछ कर नहीं पाएगा. कुछ नहीं कर पाएगा. This is like that. They are able to bring out, but you don't know who that person is. That person also doesn't know
who you are, लेकिन they feel that they have the right to. See, ऐसा एक situation Connect. हुआ था मैम. I was at a friend's place and his son came up to me and we were talking and I'm very good with children or rather children are very comfortable with me. बातचीत कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे and then I was like, oh shit. Then he actually told me, Mayur uncle, you should not say shit, and he used the F word. And father mother दोनों वहां पे बैठे. He told me not to use shit as a word and use the F word. And I was a little taken aback. I said, नहीं बेटा, this is better. You know, I was trying to change. Then father mother दोनों were उनके चेहरे उतर गए and they were like, अरे ये क्या हुआ? And they were both like, sorry Mayur, I don't know how it happened. I said, you know what? You have I know him. He's my friend. Right. I said, you are using this word while driving, Definitely. and that's why your son is using the same word. So if you stop, he will stop. And it's so true. अभी of course हमारे ऑफिस में Kanchan's daughter keeps coming to the office and I teach her all the naughty things. ऐसा ही चाहिए. टेंशन मदर को देता हूँ मैं. But then see, children mimic. They're like parrots. Like you said, एक मॉडल बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. Yes. एक मॉडल पेरेंट बनना. You know, inculcate the right habits. तो बच्चे automatically right habits सीखते हैं. So if you as a parent have this habit of shouting, screaming and doing thing, then बच्चे भी यहाँ ट्रोलिंग करेंगे, कमेंट करेंगे. It's kind of ये जो अभी रणवीर अलाहाबादिया का सिचुएशन हो रहा है, इट्स अ सैड सिचुएशन एंड मेरा स्ट्रांगली मानना है कि जितने भी लोग उसका नाम यूज करके वीडियो बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वेदर इट इज फ्रॉम न्यूज चैनल्स, बड़े न्यूज चैनल्स टू स्मॉल यूट्यूबर्स, दे आर ऑल ट्राइंग टू मेक मनी ऑफ हिज पेन. अगेन सी, समवन हु हैज बीन डूइंग पॉडकास्ट, समवन हु हैज बीन डूइंग स्पिरिचुअल पॉडकास्ट. सो दिस इज जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग. स्पिरिचुअल पॉडकास्ट बना रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नॉलेज अच्छा मिल रहा है उनके पॉडकास्ट से. सो क्या वो आदमी पॉडकास्ट में अलग है और एक्चुअली अलग है? बिकॉज अगर वही आदमी ऐसा कुछ बोल सकता है, which was derogatory, yes, okay, it was not right and it was not warranted for, called for, तो ये situation क्या है purely from a medical perspective? Okay, now here I would like to tell you one thing. Definitely I have seen many of his podcasts and he has been giving a lot of inspirational information. Very good information. Very good information. Now you have to realize one thing, the format of that program that he was in, वो format ही flawed है. But I would say flawed, वो एक particular audience, अभी वो भी जो था, that program was meant for members. So you have to pay certain subscription and then you become a member. So वो बात अलग है. लेकिन what he said was not his own. Did you know that a week ago एक दूसरे, but it was more Americanized program एक था जिसमें so वो किया था. I would try to classify it as he was copying somebody. Yes. And he was trying to be a hero. Yeah. He was copying तो someone. effectively बच्चा है. बच्चा ही है वो. Yes. बच्चा है. बच्चे को बच्चे जैसा ट्रीट करो यार. बच्चे गलतियां करते तो सुप्रीम कोर्ट मत लेके जाओ. क्या? There is no need for that. In fact, I would say कि he was doing something. He was actually, this shows his naivety. Immaturity कि उसको वो format. Yeah, so see the problem क्या हो गया ना मैम? Everybody was suddenly, because of his podcast and the kind of people who came, they expected him to be an adult. Oh, he's a kid. Treat him like a kid. Okay, he's what, 30 maybe, but that's kiddish. And वो भी हो सकता है कि बहुत जल्दी बहुत पैसा आ जाए तो वो you don't. Anyway, sad. It is sad because the format of the program is also like that. I think so it's important to kind of make sure that those kind of formats don't come out, because that's also, is that not affecting the today's a lot. The गाली गलौज, the language, यहीं से तो सीख रहे हैं हमारे बच्चे, जो भी they are using it in schools and then they get caught. हमारे घर में हमारे से उम्र में कम हो तो भी वो तू तड़ाक से नहीं बात, आप बोल के बात करना पड़ता है. तो when you see today's children, that is completely lost. Yes, I agree. Completely lost. वो एक sense of respect. It is sad, yeah. I mean it will be a very stupid question to ask कि future हम लोग कहाँ जा रहे हैं, because मैं तो पॉजिटिव आदमी हूँ एंड मुझे लगता है कि सब अच्छा ही होने वाला है, सब मस्त होने वाला है. व्हाट डू यू थिंक? सो सी, जैसे अभी जिस तरह से अवेयरनेस इज ग्रोइंग अबाउट एवरीथिंग, तो हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा. लेकिन ये अपना जो नेगेटिविटी है या नेगेटिव थॉट्स है उनको पॉजिटिव लाने में भी इट हैज टू बी एन एफर्ट. ओके, ये एफर्ट, लाइक दे से, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड. तो ये सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज नॉट
not just the parents who are responsible, it is also everybody, neighbors है, friends है, everybody. It's a combined effort. तो आप सोचो जब combined हम किसी के अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो जैसे ही वो बच्चा भी बढ़ता है और हम लोग भी, when we come together, everything is going to be good, definitely. No, because I still remember cousins and all were very close, and हम लोग घर में we use language like you use, everybody uses the F's and B's, but वो हमारे जो my nieces and all, they are one step further. They've realized कि ये सब गलत है and we should not use it. मतलब एक reverse psychology हो गया है. Yeah, lovely. हाँ. Okay, because I still remember my brother-in-law. He, my niece was about I think 17 or 18, and she said, "You know what, Dad, friends and all, हम लोग we're planning to go to a pub and a bar, and so it will be late." I said, "You know what? Do one thing. Late is not right. Get all your friends home. I'll open the bar for you. You do what you want. Do it at home." So this is what is very important. Don't stop them. You can't be part of it, no problem. But he looked at it from the safety point कि pub जाएंगे, झगड़ा होएगा, कुछ तो होएगा, problem होएगा. Why all that? घर में आओ, you want to enjoy, have a good drink. I'll give you the best, better than pub, and you don't have to pay for it. Yes. So that is best. Yeah, that is best. So, also, I would like to request everybody around there, keep a reformative outlook rather than a punishing outlook. Explain that, man. So when you say reformative, now suppose just कोई बच्चा पकड़ा गया, okay, carrying अभी हो जाता है, they carry some, आजकल तो बहुत substances जो है. अभी we're talking रणवीर का situation, ही पकड़ा गया. हाँ. So then think about, instead of punishing him, see now how best you can make him come, make him understand the gravity. I think he's already understood, but make him understand the gravity of the situation and make sure that he doesn't do that again. True. Rather than making him stand and मतलब उस पे उसको humiliate मत करो. Humiliate मत करो. See, ma'am, मेरा एक suggestion, ma'am. See, if I was in any position to actually reform him, I would say, you make the videos you want to make, whatever channel आप चलाओ, no problem, that's not an issue. But compulsorily, every day for the next 6 months, आपका पूरा वो जो रोड है, रास्ता है, आप झाड़ू मारोगे, आप साफ सफाई करोगे, do what community service. Yes. आप जितना भी आप कमाते हो, आप जाओगे सोशल होम्स में, लोगों को खुद खाना खड़ा होके खिलाओगे, जुवेनाइल डिलिक्वेंट्स के लिए जाके आप वही सिखाओगे. Do you think this is a good approach? That would be the best approach. Because here it is not like, it is again, this is not punishment. No, but this is now you're making him better. Of course. Okay, you're showing him the value of the time and money and effort, everything, na? True. Yes. Yeah, because it would be really nice if this could be incorporated, in so many, not just in this case, in so many other cases also. I believe, see, this is where I believe even our jail system is flawed, because वो ये जेल में रखो और दिन रात वहाँ बैठा है, वो खुराफात ही सोच रहा है ना. Yeah. Idle mind is a devil's workshop. Absolutely. अरे उनको काम पे लगाओ, बीएमसी को कम और लोग लगाओ, साफ सफाई में कचरा नहीं रहेगा. We are changing our topic. हमारा टॉपिक ये है कि अगर from a psychologist's perspective, we are trying to understand how good hobbies are for us, how beneficial hobbies are for us, and we've understood a lot. And ma'am, तो क्या मुझे आपके साथ अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बट आप मिलने आ सकते हैं जरूर. हाँ, मिलने जरूर आएंगे, आपके गार्डन देखेंगे and all of that. We'll definitely do that. So the point is I am fine. I vouch for that. Vouch. So डॉक्टर का ठप्पा लग गया, मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. So जितने लोग भी कमेंट करने वाले हो, मयूर पागल है, आप गलत हो. Okay, anyway, so the point is, ma'am, as a parting note, one is I'm really appreciative कि आपने time निकाला. You took a lot of time, and we've discussed so many things we've seen. That's the whole idea of a discussion, I guess. Yeah. Okay. Yes. And what is it at the end, if you want to tell people in general, what advice would you give them, please, ma'am? So I would like to say that yes, inculcating a hobby and following a hobby is the best gift you can give yourself. This is something, it need not be something expensive or something, it could be a very small thing, but trust me, this is you're making sure you are never lonely again. So yeah, I would say everybody should go in for a fulfilling, they will feel fulfilled, if they follow some hobby. Yes.
Abhi, that is great, ma'am. Thank you for the advertisement. And but in general, what message would Shefali Vaidya give the world? The clinical psychologist. The clinical psychologist, the mother, the homemaker, the wife, the Indian citizen, one as part of the world, the part of the universe. What would Shefali Vaidya share with the rest of the world? Be positive. Make sure that your thoughts, not just about the world around you, but even about self. Don't utter a single negative word about yourself. It requires work. So many times we say, I'm stupid, I'm doing this. No, please don't say that ever again. Just make sure that you use only positive terms for yourself and the world around you. Be as positive as you can. You're human, I'm human. We get negative thoughts. But the moment we get a negative thought, make sure to be alert enough to accept that, okay, it's a negative thought. I need to change it to positive. To a positive. Find the silver lining. Find the silver lining, yes. So वो जैसे कहते हैं ना मैम, if you keep thinking negative, you attract more negative. What you think, you attract. So if you think more positive, you'll attract more positive. You'll attract positive people. You'll attract all of that. True. Is that right? Yes, absolutely right. So absolutely. again, ma'am, thank you so much, and it was a great pleasure talking to you, and great pleasure knowing that I'm sane. Okay, and I don't need right now. I don't need mental help. Okay. So thank you for inviting me. I'm extremely grateful. I got a lot to learn from you also. My pleasure, thank my you honor, ma'am. so much. My honor. Thank you very much. आप सबके लिए ऑफ कोर्स अगर आप शेफाली जी को कनेक्ट करना चाहो, उसमें शर्म की कोई बात नहीं है, अच्छी बात है. उनका डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो. प्लीज टेक एन अपॉइंटमेंट. एंड मैं आशा करता हूं कि आपने इस कॉन्वर्सेशन में बहुत कुछ सीखा, जाना, समझा, कुछ अपने में अंदर बदला होगा. ओके, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग. एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से, शेफाली जी की तरफ से, पूजा मैडम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल. बहुत जल्दी मिलेंगे. ऐसा ही एक कॉन्वर्सेशन होगा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे एंड आप सबको एंटरटेन करेंगे. ओके, बाय बाय. Tired? Oh, it takes a lot of energy. I love it. You should do one more.